Higgs boson particles. Efforts to detect the existence of the Higgs boson particle has become frequent news. What is the importance? Importance it will enable us to create kariba between nuclear mission. It will enable us to create nuclear mission. Nuclear mission के लिए in the near future Higgs boson may help us to create an unbelievable energy source which can pave the way for better fuels for our nuclear mission के लिए the better fuels. The Higgs boson is not a main item that will openly the main item no that will open the way for teleportation, but it will help to understand mass item and travel in time and space. Higgs boson is not a main that will open the way for teleportation के लिए. It will enable us to understand elementary particles of mass. Higgs boson particle elementary particles एक फंडामेंटल मौलिक पार्टिकल्स इसका मास है. Correct aging. Scientists has evidence for the continued expansion of universe. Continued evidence, continued expansion, universe expansion होता है. कौन सा साइंटिस्ट एविडेंस? डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस. स्पेस में माइक्रोवेव्स है. ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशीट फेनोमेनन इन स्पेस. डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स. Evidence and evidence, continued expansion of the universe, observation of redshift phenomenon in space, movement of asteroids in space, movement of asteroid in space. ना ये नहीं होगा, एस्टेरॉयड स्पेस में नहीं होता है. साइंटिस्ट एविडेंस कंटिन्यूड एक्सपेंशन यूनिवर्स हो रहा है. एविडेंस क्या एविडेंस है? माइक्रोवेव्स इन स्पेस में है. ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फेनोमेनन इन स्पेस में रेडशिफ्ट फेनोमेना हो रहा है. एस्टेरॉयड मूवमेंट से कुछ नहीं होता है. ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस में, उसमें भी स्पेस एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहा है हमारा यूनिवर्स. माइक्रोवेव के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ की चार तरफ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. सैटेलाइट क्यों गिर नहीं जाता है? पृथ्वी की चारों ओर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज एक्सीलरेशन फॉर मोशन प्रोवाइड नेसेसरी एक्सीलरेशन फॉर मोशन. एक एक्सीलरेशन देता है. अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, नीचे नहीं गिरता है. ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्च into orbit for variety of purposes including communication, navigation, earth imaging, weather observation and scientific study. Artificial satellites are launched into orbit for a variety of purposes including communication, navigation, earth imaging. Launch into orbit for a variety of purposes including communication, navigation, earth imaging दिखाने के लिए, navigation का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, एंड साइंटिफिक स्टडी. सैटेलाइट ह्यूमन्स टिपिकली फील वेटलेस. इन सैटेलाइट ह्यूमन टिपिकली फील वेटलेस. सेंस ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी. नेट फोर्स जो एक्टिंग हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर इज प्रैक्टिकली जीरो. दिस इज ड्यू टू द सैटेलाइट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच कैंसल्स आउट द साइज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. अर्थ ग्रेविटेशनल पुल Satellite का centrifugal force which concerns about size of Earth gravitational pull. On the other hand, the Earth gravitational pull is required for the satellite to continuously. Gravitational pull नीचे खींचता है. Required for satellite continuously change in direction घूमता है. Giving acceleration for the satellite direction. Acceleration देते हैं. Direction changing process. Satellite direction. Acceleration for satellite direction changing process. When artificial satellites are sent into outer space
ह्यूज वेलोसिटी इज अप्लाइड टू वेलोसिटी देम टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशन। पृथ्वी अर्थ की ग्रेविटेशन से कंप्लीटली एस्केप पाने के लिए एट द पॉइंट दे डेवलप देयर ओन वेलोसिटी डेवलप करते हैं एंड एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। अलग फोर्स एक्टिंग होता है ऑन देम टू मूव इन द पाथ में मूव करता है अकॉर्डिंग टू अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है अराउंड सन, अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ओन वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो पैदा करता है। जब छोड़ते हैं सैटेलाइट सेंड इनटू आउटर स्पेस, ह्यूज वेलोसिटी जो अप्लाइड होता है उसके ऊपर, इसके वेलोसिटी देम टू एस्केप अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए। बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस इनवर्स ग्रेविटेशन। एस्टेरॉयड और कॉमेट किसको बोलते हैं? धूमकेतु एस्टेरॉयड, पृथ्वी एक ग्रह ग्रहणपुंज। एस्टेरॉयड small rocky planets, while comet are formed of frozen gases। comet फॉर्म तैयार बनाए जाते हैं फ्रोजन गैसेस से, हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल। एक जगह में इकट्ठा होता है, हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल्स, पत्थर और धातवीय पदार्थ से। Asteroids are found mostly between the orbit. Asteroids are found mostly between the orbit of नहीं होता है, जुपिटर मार्स के अंदर नहीं। एस्टेरॉयड होते हैं सोलर ऑर्बिटिंग स्नोबॉल सिस्टम। ऑर्बिटिंग स्नोबॉल एक बर्फी बॉल मेड ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट। कॉमेट नॉट एस्टेरॉयड्स। धूमकेतु सिस्टम ऑर्बिटिंग स्नोबॉल, बर्फ बॉल से फ्रोजन गैस फ्रोजन होके ठंडा होके बनता है, रॉक एंड डस्ट। इनलार्ज टू साइज ऑफ ए साइजेबल टाउन व्हेन फ्रोजन। ए कॉमेट हीट अप एंड इजेक्ट डस्ट एंड गैसेस। कॉमेट हीट होके इजेक्ट्स डस्ट और गैसेस निकलता है इनटू ह्यूज ब्लेजिंग हेड दैट इज लार्जर देन मोस्ट प्लैनेट से ज़्यादा। When its orbit puts it near to the sun, when its orbit puts near to the sun, सूरज की पास जब जाते हैं और इजेक्ट होता है डस्ट और गैसेस into huge blazing millions of kilometers away from the sun, the dust and gas combine होके to form a tail इसका पूंछ, the copular belt and much further wood cloud। Comet are not limited to the belt between Mercury Venus। Comet लिमिटेड है टू द बेल्ट, मर्क्यूरी वेनस के अंदर कॉमेट नहीं होता है। मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन से द डस्ट एंड गैस कंबाइन टू फॉर्म ए टेल, एक पूंछ जैसे कुइपर बेल्ट एंड मच फर्दर। वुड टू क्लाउड आर प्रिज्यूमेबली होम टू बिलियंस ऑफ कॉमेट। Clouds are presumably home to billions of comets that orbit our sun. Presumably home to billion of a comet that orbit of the sun। sun का जो चारों ऑर्बिट होता है, होम टू बिलियन ऑफ कॉमेट का होम होता है। वुड क्लाउड